Hello and welcome to the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty on stock markets with KR। ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस है दोस्तों। हम लोग इसमें चार्ट को नहीं देखेंगे बट निफ्टी और बैंक निफ्टी के नंबर्स को देखेंगे। तो देखिए, निफ्टी क्लोज हुआ 21 जनवरी को 17,617 पे क्लोज हुआ और 638 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज विच इज इक्विवेलेंट टू 3.5%। एंड मजे की बात यह है कि एज ऑन इन कंपैरिजन टू 3rd of January 22 which was the first trading day, Nifty close on that day was 17625.7। तो in relation to 3rd January, Nifty has come down by 8.5 points which is 0.05%। So money between 3rd of January and 21st of January, 19 days, Nifty has made a negative move। तो अगर आपने निफ्टी में पैसा लगाया होता तो आपके पैसे का 0.05% आपको ये नुकसान होता था। एंड लेट्स चेक हाउ द बैंक निफ्टी परफॉर्म्ड। बैंक निफ्टी एंडेड on Friday 21st January 2022 at 37,574, down 796 points, या तो 2% से भी थोड़ा ज्यादा पे ये गिरावट आ चुकी। 2.07 की गिरावट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी निफ्टी के अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और ये बात आपको यहीं से भी मालूम होती है और यहाँ से भी मालूम होगी क्योंकि बैंक निफ्टी 3 जनवरी 2022 को इसकी क्लोजिंग हुई थी 36,421 पे, विच इज 1,152 पॉइंट्स away from the close of 21st January, which is a very good sign and which is also giving a 3.16% appreciation from the beginning of January. So Bank Nifty has clearly outperformed Nifty by a wide margin। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओपनिंग रिमार्क्स। लेट्स लुक एट द लोएस्ट पॉइंट्स इन जनवरी फॉर निफ्टी 17383.3 ऑन 3rd of January एंड हाईएस्ट पॉइंट ये था 18,351 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी से लेके 21 जनवरी, 18, 19, 20, 21, 4 दिन में कितने पॉइंट की गिरावट आ गई? 750 पॉइंट की गिरावट तो उधर ही आ गई भाई। तो बहुत ही खतरनाक ये है और डिफरेंस जो है निफ्टी ये हाईएस्ट पॉइंट से जनवरी के 5.5% नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी लोएस्ट पॉइंट इन जनवरी वाज 35,526 व्हिच इज 3,328 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द हाई पॉइंट ऑफ 38,855 which was hit on 18th January as well। So this is a very big deviation in bank nifty and nifty as well। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो क्या है, इसका तालमेल यह है कि 1:3 का रेशियो होता है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाए तो बैंक निफ्टी 300 जाए तो समझ लेना कि मोटा मोटी अच्छा है। 2-2.5% या 3 गुना अगर ऊपर जाए तो सही तालमेल है इन दोनों के बीच में। And if there is a mismatch, this is a mismatch here. It is clearly evident. Nifty went up. The difference between high and low is 5.5% for Nifty, and it is 9% for Bank Nifty. So in percentage terms, at least it should match. But Bank Nifty has clearly outperformed, as we have seen here, by 3.16%। तो ये दोनों की जो एवरेज मिला है हाई और लो की, तो एवरेज है 17,867 and Nifty ended at 17,617। Clearly Nifty is below the average and it is not a good sign। Bank Nifty on the other hand is above the average at 3789, नहीं है ये क्या है देख लेते हैं, 37574 एंड बैंक निफ्टी इज एट 37191। बिटवीन हाई एंड लो की जो एवरेज है उससे ऊपर क्लोजिंग हुई है। लेकिन
जो मंथ की एवरेज है बैंक निफ्टी की, दैट इज एट 37,894 और 900 टू राउंड इट ऑफ. It is closed below that. So as long as it is below 37,900, it is not a good sign. And Nifty तो काफी दूर है, 17,900 से 300 रुपया ऑलमोस्ट नीचे है. तो ये भी अच्छी बात नहीं है निफ्टी के लिए. तो थोड़ा देखिए, थोड़ा मंदी का माहौल है. Things are not as good as they were last week, so one has to be careful. And budget is also approaching, so generally budget के पहले थोड़ी तेजी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं. These are the monthly average points of open, high, low, close for bank nifty, which is open अगर यहाँ पे है तो ठीक है, उसके नीचे कोई भी open है which is not good. High point, anything lower than 18,000 is not good. उसका लो पॉइंट एनीथिंग लोअर देन 17845 इज नॉट गुड. भाई यहाँ पे तो क्लोजिंग ही 17,600 की हुई है, तो लो का तो सवाल नहीं है. लो वाज 485, इंटरचेंज हो गया नंबर. यहाँ पे देखिए 845 और 485 कैसा है. जस्ट आई विश दिस वाज 845, बट then that is not the case, right? And the closing should be around 17,950 plus, whereas we are 300 plus points away from that average wishful closing. That is what the thing is. और निफ्टी में मेन इश्यू कहाँ पे आया? मेन इश्यू ये आया गया कि निफ्टी में मेन इश्यू ये नहीं है. Let's just look at bank nifty, then we will come to the main issue in case of both the indices. So here is Nifty, Bank Nifty. Open, high, low, close 37,823. Close is 37,572 4 का है. So ये close average close से भी नीचे है. ये एवरेज हाई होना चाहिए, उससे भी नीचे है. ये एवरेज लो पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है. दिस इज सम कंसोलेशन एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग इज 40 पॉइंट्स plus the average low point of bank nifty in January, and it is around 300 points away from 37,900, 325 points, which should have been the average closing. So bank nifty also underperforming, but in relation to nifty it is clearly better placed. So आपको ये नंबर सब अच्छा इजी है. जिसको चार्ट समझ में नहीं आता है वो खाली नंबर देख के भी ट्रेड कर सकता है. अभी देखते हैं एफआईआई, डीआईआई और इंडिया विक्स, यानी वॉलेटिलिटी की मूवमेंट बाजार में कितनी. जो फियर फैक्टर था वो सबसे ज्यादा फ्राइडे को था, लगभग 19 का रीडिंग है यहाँ पे. तो ये खतरनाक है, ये अच्छी बात नहीं है. और एवरेज है 17.35, सो इट इज वे अबाउ द एवरेज. सो मेरे ख्याल से 16 के नीचे अगर होगा तो ही कुछ स्टेबिलिटी आएगी बाजार में, अदरवाइज दिस विल कीप हैपनिंग. On an average, FIIs have been selling at the rate of 1,000 crores per day on an average in January, and on an average DIIs have been buying at 509 crores. But if you really see, the main issue is here. In this week alone, 4 and 3, 7 and 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13 crores have been sold in the last 5 days only by FIIs. Of the total sale of 15,562 crores, FIIs have made a total sale of 13,000 crores in this week, and that is why Nifty has come down. That is why Bank Nifty has also come down. DIIs have bought, as per my tracking, 7,600 plus crores, लेकिन as per stockage tracking 7,400 crores. शायद मेरी कहीं पे गलती होगी, but on an average the 8,100 crore की net selling हुई है in January, which is not a good sign. So let's hope that the numbers change for good, and let's hope that in anticipation for the union budget on 1st February,
things start improving. Here is the textual format of what I have spoken. ये आपको सब दिखा देगा. This is an important caution notice. Please do not go long aggressively, because we don't know whether this is the bottom, because every day some people must be thinking इससे नीचे तो नहीं जाएगा, और दूसरे दिन 200 point gap down, right? So this is a problem. This is what I have already spoken. I have shared with you via my speech, एंड दिस इज ओनली अ टेक्सचुअल फॉर्मेट. आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. तो again, I am not SEBI registered, neither KR is SEBI registered. We are sharing this purely for information and educational purposes, only based on our experiences. Okay, friends, this is it for now. We'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep making money, and keep protecting your capital as well. Best wishes.